थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे आरडी पे कमेंट नहीं दिए ना, मैं शो नहीं हुए मैसेज, कल मैं चले आई, मैंने कमेंट पे किया था आपको कि भैया दे देना ब्लू, क्योंकि मेरे इस वाले आरडी से दूसरी वाले से कमेंट शो नहीं होते किसी में। कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ भैया, बच्चे थोड़े परेशान हैं, कल भीग उग गए थे, उन्हीं को जुकाम खाम हो रखा है, बाकी मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? घर में सब लोग कैसे हैं भैया? कमेंट कर दिया था आपने पहले वीडियो पर हमारे, बताइए। मैंने आपके वीडियो पे पहले ही कमेंट किया है, कमेंट शो नहीं हुआ क्या वीडियो पे आपके? सब लोग बढ़िया। अरे भैया, मैं आपके लाइव से चालू होने से पहले मैंने 11:30-12 बजे के करीब में मैंने आपके वीडियो पे, पहले वाले दोनों वीडियो पे मैंने कमेंट किया है, देखना। इसका मतलब मुझे लग रहा है कमेंट भी नहीं शो हुआ है ना। हाँ, देख के आइए, इस वाली आईडी पे आप ना ब्लू दे देना, जो ये की गौतम वाली आईडी है। कोई कमेंट शो नहीं कर रहा है आपका। अच्छा भैया, 3 वीडियो जाकर चेक करें, हमने अभी उस पे किए हैं, बाबा साहब के मार्ग पर बताए हुए चलता रहूंगा, उस पे जाके देखना। तब आपने, आपकी वही वीडियो थी, उसके बगल में बिल्ली वाली जो थी, बाबा साहब के बताए गए मार्ग पे चलना, उस पे किया था। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी फिर कर रही हूँ, रुको।
मैंने अभी किया, चेक करो। बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं दीदी। रेनू दीदी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सिस्टर। ब्लू दे दिया हमने। ओके भैया, थैंक्स। ओके दीदी, ओके। वो लक्ष्मी सिस्टर नहीं है, वो बड़े भैया हैं।
जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती भाई थैंक यू सो मच। सोई नहीं हूँ भाई, किचन में थी। ये दोनों अभी बिस्तर में ही है। आपका नाश्ता हो गया दीदी? अरे नहीं भाई, नाश्ता नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। कैसी हो भांजी? मैं ठीक हूँ। तू ठीक है? बुखार नहीं है? झूठ बोलेगी? मामा से बोल कि मैंने मम्मी को परेशान किया है। ये नहीं बोलेगी? अच्छा अच्छा, परेशान नहीं किया। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? दर्द हो रहा? कान कान दर्द हो रहा है? एक साइड से हो गई इसलिए आराम से रोते नहीं। और दीदी अभी सोई हुई है? नहीं भाई, सोई नहीं हूँ। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। जय भीम भैया, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम आपको भी। आप बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा भारती भाई? आप कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ, आपका नाश्ता हो गया दीदी? अभी कुछ नहीं हुआ भाई। क्या हुआ भांजी? श्रेया को बुखार हो गया, जुकाम हो गया। दर्द हो रहा सिर? अभी विक्स लगा। जुकाम बुखार हो गया है, कल भीग गई थी ना बारिश में। आपका तबीयत कैसा भारती भाई, आप बताओ। कैसे हो भारती भाई, आप बताओ। मेरा तबीयत ठीक है दीदी। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो भाई, तबीयत ठीक नहीं है। मैं यही कारण दवा नहीं खाता हूँ। सच में भाई, दवा ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे, इंसान मजबूरी में खाता। दवाई का भी एक आदत पड़ जाती है, दवा की भी एक आदत पड़ जाती है भाई। सब चीजों नहीं खाता, बरा लेता है ना, उसके लिए सही है। मैं पहले सोचता हूँ कि किसके कारण ये दर्द हुआ। पहले सोचते हो किसके कारण हुआ। हम तो नहीं सोच पाते हैं भाई। रहने दो बाबू, रहने दो ना। सो चाय बना रही हूँ, पापा आ रहे हैं। मैं उसी पर ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं तो नहीं सोच पाती ना भाई। मैं सोचा कि सर दर्द मेरा 3 कारण से हुआ है। अच्छा बताओ। जुकाम या कुछ सोचे हो? पहला कारण ठंड। दूसरा कारण पानी कम पीना। अच्छा, पानी कम पीने से भी सर में दर्द होता है? तीसरा जुकाम, कि तीसरा क्या कारण हो सकता है? तीसरा कारण ज्यादा टेंशन। सही बात है भाई, बात बिल्कुल राइट है। सही बात है भाई।
इन सभी को सुधार किया और मैं ठीक हो गया, वो भी बिना दवा को। आपकी तरह डॉक्टर बनना पड़ेगा भाई ने, तभी कोई ठीक हो पाएगा। हम लोग तो इतना माइंड नहीं काम करता है ना। बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल, क्योंकि दवा रिलीफ करता है, ठीक नहीं करता। बिल्कुल भाई, ये बात तो राइट है। दवाइयों से कई चीजें दब जाती हैं, फिर बाद में वैसे ही हो जाती हैं। मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होता है तब मैं दवा लेता हूँ। अच्छी बात है भाई, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी होती है फिर जाना पड़ता है हॉस्पिटल। लापरवाही भी कभी नुकसान कर देती है, वो भी पहले घरेलू उपचार, उसके बाद मैं औषधि। आपकी बात अच्छी है भाई, घरेलू उपचार, पहले के लोग घरेलू उपचार ही करते थे। बाहर देख रहे हो कितनी हवा चल रही है बेटा, जाके डाल लो। आज उठना नहीं है क्या आकाश? होता है दीदी, लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए दीदी। क्या? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। काली चाय बनाओ, काढ़ा बनाओ, काढ़ा नहीं पीना, काढ़ा नहीं पीना, दूध वाली चाय पीनी है। मैं आता हूँ, सभी आईडी से लाइक कमेंट करके दीदी हैं।
मटर छील लें। 1 मिनट, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा दीदी। बोलो भारती भाई क्या फॉलो करना है? हस्बैंड आ गए थे, कुछ बात कर रहे थे तभी म्यूट कर दिया था। बोलो भारती भाई क्या फॉलो करना है? नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। थैंक यू भाई, थैंक यू। बताना भारती भाई क्या फॉलो करना है, प्लीज बताओ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। क्या फॉलो करना है भाई, बताओ ना भारती भाई। कहाँ गए भाई? भारती भाई बोलो क्या फॉलो करना है? बोलो भारती भाई क्या फॉलो करना है, चले गए बताए नहीं। जल्दी बोलो।
कितना मटर ठीक है देखना।
फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होगी। इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुणों से होगी। बिल्कुल राइट भारती भाई, आपने बताया नहीं, पता नहीं क्या बोल के चले गए। मैं लाइव में नहीं हूँ दीदी। फिर कहाँ हो भाई? लाइव में नहीं हो? क्या बोल रहे थे दीदी? उसको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। फिर चले गए। हाँ नियम को, कौन से नियम को बताओ? मैं तब से चिल्लाती रह गई, आप चले गए। क्या बता, क्या है? क्यों कूका कर रही है? कौन से नियम भाई बताना। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। नींद खुली कि नहीं खुली आपकी? बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? रोते नहीं है, लेटे रहो। किसने मारा बाबू को? आकाश। आकाश गंदा, चुप जाओ। आपको पता नहीं है दीदी कि मैं अभी बिना ब्रेक का गाड़ी ही। अच्छा भाई। सिर में दर्द हो रहा है? यही दर्द हो रहा है? अभी रुक जाओ, झुंडू बाम लगाती हूँ। कहाँ है पता है? कहाँ है? कपड़े धो रही ना बेटा थोड़ा, मैं दूसरे के सहारे चल रहा हूँ। मैं रिचार्ज करूँ? बताओ कौन सा नंबर है आपका, कौन सी कंपनी का? चुप जाओ, बैठो। मैं अभी लगा रही हूँ, थोड़ा सा कपड़े धुल लो। ड्रेस व्रेस सूखेगा नहीं ना, मौसम खराब है ना, 2 दिन लग जाएंगे सूखने में। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आज सुबह से बहुत बिजी हो गई हूँ काम में। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। सोनू भैया, सोनू भैया बिना ब्रेक के चल रहे हैं। नहीं। आप कैसे हैं सोनू भैया जी? सोनू भैया बिना ब्रेक के चल रहे हैं भाई। तुमको श्रेया बुला रही है, जरा सुन लेना। आपका खाना पीना हो गया सोनू भैया? सोनू भैया बिना ब्रेक के चल रहे हैं भारती भाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? खाना पीना हो गया? मैं भी खाना नहीं खाया हूँ सोनू भैया। मैं भी ठीक हूँ सोनू भैया जी। ऐसा क्यों दीदी? ऐसा इसलिए कि ऑटोमेटिक चल रहे हैं ना सोनू भैया, इसलिए बोल रही थी। इधर साउंड चालू हो गया तब तक। दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जितने का ऑनलाइन किया था उन सभी का आज 7 बजे पैसा आ गया। अच्छा भाई, लेकिन मेरा अभी पता ही नहीं है कि मेरा पैसा कब आएगा। अच्छा आपका नहीं आया? मैं तो सोचा आपका आ गया।
मेरे में भी भेज दो भाई, देख लो। एक कंजूस और बैठे हैं जो कमा रहे हैं, वो भेजने के लिए बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं भाई लाओ मैं थोड़ा हेल्प कर दूं। मेरा तो अभी कॉलेज में वेरीफाई नहीं किया है। अच्छा सोनू भैया कहाँ है पता है बाबू? दवाई दो, उठ के बैठो तब ना दवाई दो। उठ के बैठो, रोने से नहीं अच्छा होता कोई। उठ के बैठो दवाई दो। छोटे श्रेक दवाई खिलाओ, उठ के बैठो। हाँ जी हाँ कटोरा लेके आ रहे हैं देखो। क्यों? पूछ रहे हैं श्रेया कुछ खाना ना बनाई है? कुछ बनाई हो श्रेया? कहते मामा मेरे यहाँ तो आज पनीर बन रही है जो आपको पसंद नहीं है। कौन ऐसे बड़े भाई जो खुद कमाते हैं और पढ़ने वाले भाई से पैसा मांगते हैं? वही तो मैं भी कह रही हूँ भारती भाई। आज क्या खाई भांजी? अभी नहीं खाई भाई, अभी तो बन रहा है। अभी बन रहा है भाई। अभी उसके पापा पनीर बना रहे हैं, मैं अभी बनाऊंगी रोटी। पहले कपड़े धुल लो उसके बाद। पापा से पूछो पनीर बनेगी? अभी तो हो रही है बेटा। क्या कटोरा? आपको तो पसंद नहीं है पनीर, आपको तो चिकन मटन चाहिए ना, शाम को मिलेगा। आज वैसे वो ऑफ है, जरूर बनेगा शाम को, मुझे पता है। बैठ जाओ बैठो, बैठ जाओ बेटा दवाई खिला दो, बैठ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इधर अलार्म चल रहा भाई, क्या करूं, बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। कभी कभी एक रो रही है, एक अभी मेडिसिन दे रही है उसको। नहीं मैं मेडिसिन का छिलका फेंक रहा हूँ। मेडिसिन का छिलका फेंक रही है, लेकिन मुझे तो पसंद है पनीर। ओके भाई आ जाओ आ जाओ, आज हस्बैंड बना रहे हैं। उठ जाओ बेटा उठ जाओ, मुझे पता है जुकाम जकड़ लिया। उठ जाओ, उठो, थोड़ा सा हिम्मत करते हैं, उठो। अभी लाइन में लगे जरा कोई इस गरीब को भी ख्याल कर लिया कीजिए। गरीब कौन है? गरीब कौन है? भारती मामा। तने कुछ बोलोगी बाबू? जाना क्या? गरीबों की भी लाइन है, लाइन में लग जाओ। ऐसा नहीं है भारती सोनू भैया। क्या हुआ? मिस्टर को मैथ की नोटबुक चाहिए। मैथ में बोले तो वो अच्छे से तो तुम ले कल से ले आना। बिना बैग के ट्यूशन जाएगा? अबे रोने लगा घर चला। अच्छा एक आदत मैंने तुम्हारा कंप्लेन सुना है फैजान, पहले ये बताओ आकाश को क्यों बोलते हो कि जो मेरी औकात है तेरी औकात नहीं है? मुझे पहचान तुम्हारे बस की बात नहीं है भांजी। और ये मी सॉरी सॉरी नहीं, उसको पैर पे चढ़ गया, तुझे दिख नहीं रहा? सॉरी सॉरी तुझे चुभ गया जो पहनी थी पैर में। इतना तेज, इतनी जल्दी क्या है? या तो बेटा मैं तुमको ही लेके बैठ सकती हूँ या तो काम ही कर सकती हूँ, दो में से एक ही करवा लो जो करना। बोलो काम छोड़ दूँ तो तुमको लेके बैठ जाऊं।
नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय संविधान भैया। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सो मच। जय भीम भैया, भारती भाई, जय भीम, थैंक यू सो मच। नाराज नहीं होइएगा अगर कोई कमेंट हो जाए, थोड़ा सा बिजी हूँ, काम कर रही हूँ भाई। थैंक यू सोनू भैया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय भाई।
थोड़ी सी बिजी हूँ भाई, इसके लिए सॉरी। देखो ये यार बीमार नहीं पड़ जाती है, मुझे बीमार कर देती है, इतनी परेशान करती है ना कि मैं क्या ही बोलूं। दीदी मैं आज जा रहा हूँ पार्टी करने, यदि आप लोग का पार्टी में शामिल होना है तो कृपया मेरे से संपर्क कीजिए और मेरा एड्रेस जानने के लिए सीखो ये पर डाउनलोड कीजिए। अच्छा भाई, डायरेक्ट संपर्क कर लेंगे, सीखने की क्या जरूरत है।